Computer Science Class 11, Chapter number 5, Long Response Questions. First question है, what is blockchain technology? Describe in detail how transactions are processed using blockchain technology. तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर. पर्पस क्या है इसका कि दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन चेन ऑफ ब्लॉक्स secured and maintained by a network of computers. क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड. ठीक है, इसकी तकरीबन 8 स्टेप्स हैं, हर एक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे फर्स्ट है इनिशिएशन. अ यूज़र क्रिएट्स अ डिजिटल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग सेंडर एंड रिसीवर एड्रेसेस एंड द अमाउंट. इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एड्रेस होना ज़रूरी है कि वो रिसीव कहाँ से करेंगे और सेंड कहाँ पर करेंगे, एंड द अमाउंट साइंड विद द सेंडर्स प्राइवेट की फॉर सिक्योरिटी. सेकेंड है ब्रॉडकास्टिंग. द ट्रांजेक्शन इज सेंड टू द नेटवर्क ऑफ नोड्स वेयर इट इज़ एडेड टू द पूल ऑफ अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन्स. इसको कन्फर्म करने के लिए अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन्स के साथ इसको कंपेयर किया जाता है. वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है कि नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन बाय सिग्नेचर वेरिफिकेशन. सिग्नेचर कोई सा भी हो सकता है, उसकी कोई की हो सकती है या फिर कोई कोड हो सकता है. सफिशिएंट बैलेंस यानी कि वो ये अकाउंट से ये कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जितना अमाउंट आप सेंड कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट से, वो ये कंफर्म करते हैं कि उतने आपके पास फंड्स हैं भी या नहीं. डबल स्पेंडिंग चेक कि ये जो फंड्स आपके अकाउंट में हैं ये किसी और पर्पस के लिए भी तो नहीं आपने यूज़ करने. तो ये सारी कन्फर्मेशन होती है. फोर्थ जो स्टेप है उसका वो है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लॉक. वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस आर एग्रीगेटेड इनटू अ न्यू ब्लॉक. कॉन्सेंसस यानी कि nodes reach agreement to add the new block using mechanisms like proof of work. Proof of work क्या है कि miners solve cryptographic puzzles to validate blocks. Proof of stake क्या है कि validators create new blocks based on their staked coin. Sixth जो इसका step है वो है adding to the blockchain. The new block is linked into the previous one using a hash function ensuring integrity. Seventh में है propagation. The updated blockchain is shared with all nodes, ensuring everyone has the latest version. और eighth last है confirmation. As more blocks are added, the transactions become increasingly secure, making it nearly impossible to alter the history. Second question है, और ये important भी है, briefly explain the role of following technologies that enabled IoT. First है उसमें cloud computing. तो क्लाउड कंप्यूटिंग को ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन करना है कि ये है क्या. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर. जो मेन बात है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर IoT डिवाइसेस टू फंक्शन एफिशिएंटली इफेक्टिवली. इट अलाउज फॉर. अब जो उसका रोल है वो तकरीबन 3 पॉइंट्स में हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट उसमें है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. IoT devices generate massive amounts of data. Cloud platforms offer scalable storage solutions and powerful computing capabilities to process and analyze data. जो process and analyze data है ना, this data ये इसका main work है. Second आ जाता है remote accessibility. Remote accessibility में आ जाता है कि users can access data and control devices from anywhere via internet, enhancing usability and convenience. और जो थर्ड है वो है इसका स्केलेबिलिटी. क्लाउड सर्विसेज कैन ईजीली स्केल टू अकोमोडेट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस एंड ग्रोइंग डेटा डिमांड विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. Communication protocols. Communication protocols are essential for enabling devices to connect and communicate effectively. Enabling devices forward to communicate effectively. They define the rules for data exchange, ensuring the compatibility and reliability. Key roles include interoperability. Protocols like MQTT, CoAP, and HTTP
ensure that different devices and platforms can communicate regardless of manufacturer or technology. Second है efficiency. Lightweight protocols help minimize bandwidth, usage, and energy consumption, which is crucial for battery operated IoT devices. And the third one is security. Many protocols incorporate security measures to protect data integrity and confidentiality during transmission. Third है embedded system. Embedded systems are specialized computing devices integrated in IoT devices, allowing them to perform specific functions. Their roles include data collection. Embedded systems gather data from sensors, enabling real-time monitoring and control various environments. Second है decision making. These systems often include processing compatibilities to analyze data locally, allowing for quick responses without needing to communicate with the cloud. Third है control functions. They enable devices to carry out actions based on data inputs such as adjusting temperature, turning on lights, or triggering alarms. Third है criticize the negative impacts of AI system in the domain of education and learning of students. अब इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम ऑलमोस्ट 6 यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आप कोई एक स्किप भी कर सकते हैं, 5 भी काफ़ी है आपके आंसर के लिए. ठीक है, तो जो एजुकेशन और लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें एआई के जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करना है. तो उसमें जो फर्स्ट है और जो बहुत कॉमन है वो है इक्विटी एंड एक्सेस इशू. इसमें भी दो डिवीजन है. इसमें एक है कि डिजिटल डिवाइड, ठीक है, कि जो ऑल स्टूडेंट्स हैं उनको एआई की टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते. नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजीज़, लीडिंग टू डिस्पेरिटीज़ इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारे स्टूडेंट्स के पास इक्वल नहीं है. ठीक है, कोई किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है. स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स में लैक एक्सेस टू नेसेसरी डिवाइसेस और हाई स्पीड इंटरनेट. हाई स्पीड इंटरनेट इस वक्त जो पूरे ग्लोबल रीजन में बहुत कॉमन हो गया है ये प्रॉब्लम कि हर एक के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता. ठीक है, और इसी में जो सेकंड पार्ट है वो है रिसोर्स एलोकेशन. स्कूल्स विद मोर फंडिंग में इन्वेस्ट हैवीली इन AI टूल्स, फर्दर widening the gap between well-resourced and under-resourced institutions. सेकेंड है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. अब ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डेटा कलेक्शन एंड कंसर्न्स में क्या होता है, एआई सिस्टम ऑफन कलेक्ट सेंसिटिव डेटा अबाउट स्टूडेंट्स. एआई सिस्टम जो सारे हैं, ठीक है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, इंक्लूडिंग देयर परफॉर्मेंस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, this raises concerns about privacy and potential misuse of data. कि डेटा जो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है या उनके पास जा रहा है तो इसका कहीं मिस यूज़ ना हो जाए. Vulnerability to breaches. Educational institutions may not have robust security measures, making student data susceptible to cyber attacks and breaches. Cyber attacks भी उसमें बहुत कॉमन है. थर्ड है ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी. इसमें क्या है, डिमिनिश्ड क्रिटिकल थिंकिंग. जब सब कुछ एआई पे बेस हो जाएगा, ठीक है, आप एक एक बात जाकर उसी से पूछेंगे, कोई आंसर कॉन्सेप्चुअल होगा या कुछ और, तो उसकी रीज़न आपको वो देगा, आंसर आपको वो देगा, रिस्पॉन्स जब सारे वही करेगा तो आप बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो रहेंगे. तो उस पर जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो एक सिफ्त है वो प्रॉब्लम करेगा. फिर excessive reliance on AI tools can lead students to depend on technology for answers, potentially undermining critical thinking and problem solving skills. यानी कि ज़्यादातर यही है कि आंसर्स जो उनके नॉर्मल क्वेश्चंस के हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो उनकी अफेक्ट करेंगी. नेक्स्ट है रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन. एआई सिस्टम में रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड फेस टू फेस इंटरेक्शंस विच आर क्रूशल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. अब जो सोशल स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस है ये इससे वीक हो जाएगा जब आपका एआई सिस्टम टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग सिस्टम एआई हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ है बियास एंड फेयरनेस इश्यूज़. बियास यानी कि बेईमानी और फेयरनेस इश्यूज़. फर्स्ट इसमें आ जाता है एल्गोरिथम बियास. AI system can perpetuate existing biases in educational content and assessments.
leading to unfair treatment of certain student groups based on race, gender, socio-economic status. ٹھیک ہے, ریس یعنی نسل, جینڈر اور سوشو اکنامک اسٹیٹس, اس کے بیسس پر ڈفرینٹ ایجوکیشنل اسٹیٹس ہو جائے گا. لیک آف ٹرانسپیرنسی. لیک آف ٹرانسپیرنسی کیا ہے کہ مینی اے آئی الگوریتھمز آر بلیک باکسز میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار ایجوکیٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈیسیجنز آر میڈ وچ کین لیڈ ٹو مسٹرسٹ اینڈ فرسٹریشن. اس میں یہ پرابلم ہے. ففتھ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن, اسٹینڈرڈائزیشن آف لرننگ. AI often promotes standardized curriculum which may not account for individual learning styles or needs, potentially stifling creativity and personal growth. Next ہے inaccuracy and misleading information. AI systems are not infallible and may provide inaccurate information. یہ ہر ایک جگہ پر یہ ہے کہ یہ inaccurate information دے سکتا ہے, بالکل اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا, leading students to form misconceptions or learn incorrect material. سکستھ اس میں ہے جاب ڈسپلیسمنٹ اینڈ کنسرنس, ریڈیوس ٹیچنگ رولس. دا انٹیگریشن آف اے آئی ان کلاس رومس could lead to fears about job security among educators, which with potential downsizing in teaching positions on technology takes over certain instructional roles. Second ہے depersonalization of education. The focus on AI-driven learning tools might devalue the unique contribution that human educators provide, such as mentorship. ٹھیک ہے, اب یہ جو کوالٹیز ہیں یہ اے آئی سسٹم میں نہیں ہے. مینٹورشپ, انسپریشن اینڈ ایموشنل سپورٹ, یہ آپ کا اے آئی ٹیچر کبھی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ایگزامن دا ریزنس بہائنڈ دا کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس امنگ اسٹیک ہولڈرز ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف اے آئی سسٹم. تو آنسر اس کا یہ ہے کہ کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس امنگ اسٹیک ہولڈرز ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف اے آئی سسٹمس کین ریز فرام ویریئس فیکٹرس. اب وہ فیکٹرس کون کون سے ہیں ان کو ہم ریزنس دیں گے یہاں پر, کیونکہ کوشچن میں ہم سے ریزنس ہی پوچھے گئے ہیں. ڈائیورس آبجیکٹیوس. ڈائیورس آبجیکٹیو میں کیا رہتا ہے کہ ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کے. ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرس سچ ایز ڈیولپرز, یوزرز, بزنس اینڈ ریگولیٹری باڈیز آفن ہیو ڈفرنگ پرائورٹیز. فار انسٹنس, developers may focus on innovation and technical capabilities while users may prioritize usability and functionality. Second ہے short term versus long term interests. Business might seek immediate ROI from AI implementations, while researchers and ethicists may emphasize long term societal impact and sustainability. Second ہے varied perspective on ethics and responsibility. Ethical concerns اس میں کیا ہیں کہ different stakeholders may be divergent views on ethical issues such as data privacy, bias and accountability. ٹھیک ہے, یہی اس کے مین پوائنٹس ہیں. For example, developers may prioritize performance metrics while ethicists focus on minimizing harm. Second اس میں ہے responsibility for outcomes. There can be disagreements over who is responsible for the consequences of AI decisions, such as errors or biases leading to conflicting requirements in a system design. Third ہے regulatory and compliance challenges. ریگولیٹری اسٹینڈرڈس میں کیا ہے کہ ریگولیٹری باڈیز میں امپوز اسٹرکٹ کمپلائنس ریکوائرمنٹ دیٹ کنفلکٹ ود دا اسپیڈ اینڈ فلیکسیبلٹی ڈیزائرڈ بائی دا ڈیولپرز اینڈ بزنس. بیلنسنگ انوویشن ود ریگولیٹری کانسٹرینٹس کین کریٹ فرکشن. فورتھ سیکنڈ پارٹ اس کا ہے گلوبل ڈفرینسز. ڈفرینٹ کنٹریز اور ریجنز میں ہیو ویرنگ ریگولیشنز ریگارڈنگ ڈیٹا یوزیج, privacy and AI applications, complicating the development process for globally deployed systems. Fourth ہے اس میں technical limitations versus user expectations. اب ہر ایک جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ اسی میں ورکنگ کرتا ہے اور باقی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. اور اس کے جو اگینسٹ بات ہے بالکل وہ یہ ہے کہ یوزر ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کیا چاہیے اس سسٹم سے, کیا وہ وہی چاہتا ہے جو اس کی لمٹس ہیں. تو ریئلسٹک کیپیبلٹیز میں ہے کہ ڈیولپرز میں انڈرسٹینڈ دا ٹیکنیکل لیمیٹیشنز آف اے آئی. ٹھیک ہے, وائل یوزرز آفن ہیو ہائی ایکسپیکٹیشنز فار اے آئی کیپیبلٹیز, دس گیپ کین لیڈ ٹو کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ وٹ دا سسٹم کین ریئلسٹکلی اچیو. آپ کا سسٹم کوئی ایک چیز اچیو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی لمٹس کے اندر رہ کر. کوئی آپ اس سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتا تو اٹس ناٹ دا فالٹ, وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. User-centric design. While users may prioritize ease of use
intuitive interfaces, developers may be constrained by technical complexities that necessitate more sophisticated designs. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم اس کا 5th پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں. اس کے بھی 6 ہیں, آپ کوئی بھی 4 یا 5 اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 5th ہے اس میں ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن میں جو پہلی بات ہے وہ ہے فنڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ. The stakeholders may have different views on budget allocation, with business wanting to minimize cost and researchers advocating for more investment in safety and ethics. اور سیکنڈ اس میں ہے ٹیلنٹ اینڈ ایکسپرٹیز. The availability of skilled personnel can influence project direction. For instance, a lack of AI ethics expertise may lead to focus on technical features and the expense of ethical considerations. 6 اس میں ہے cultural and social factors. Cultural differences اس میں کیا ہے کہ stakeholders from diverse cultural background may have varying attitudes toward technology, privacy, data sharing, leading to conflicting requirements. اور دوسرا ہے public sentiment. Community attitudes toward AI can influence stakeholder perspective, especially if there are prevailing concerns about job displacement or privacy, creating additional tension in the development priorities. Last question ہے consider creating a cutting edge system for language learning. The priorities of teachers, learners and programmers. 3 ڈسکس ہم اس میں کریں گے کہ ٹیچرز, لرنر اور پروگرامرز کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ کیسے ڈیفر کرتی ہیں. How would it help to make new language learning system better by incorporating the varying properties? How can AI be added to it? ٹھیک ہے, تو آنسر اسٹارٹ کریں گے. Creating a cutting edge language learning system requires a thoughtful integration for the differing priorities of teachers, learners and programmers. So by incorporating their varied perspectives, the system can be more effective, engaging and user friendly. Here's how each stakeholder priority can enhance the system and how AI can be integrated. First has stakeholder priorities. اب اس میں ٹیچر, لرنرز اور پروگرامرز کا کیا رول ہے, کیا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. ٹیچرس فوکس آن افیکٹو کریکولم ڈیزائن, اسسمنٹ ٹولس اینڈ یوزر فرینڈلی انٹرفیسز. یہ اس میں ٹیچرس کا کام ہوگا کہ انہوں نے ایک ہائی کوالٹی کریکولم ڈیزائن کرنا ہے, اسسمنٹس دینی ہیں, اور اس کا جو سیکنڈ ہے لرنرس, پرائیورٹائز انگیجمنٹ, پرسنلائزیشن اینڈ ریئل ورلڈ application of language skills. And the third is programmers. Aim for scalability, reliable performance and robust security while integrating AI capabilities. Second ہے enhancement from integration. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ collaborative design involve all stakeholders in the design process to create a comprehensive and user friendly system. Iterative development, use feedback loops. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کہ فیڈ بیک لوپس کو یوز کرنا چاہیے to refine features continuously based on user experiences. Third ہے holistic experience, combine educational insights with engaging content for effective learning. Last ہے incorporating AI یا role of AI. اس میں ہے کیا adaptive learning. AI can personalize learning paths based on individual progress. ٹھیک ہے. Next ہے language learning. Natural language processing enables real-time feedback on pronunciation and grammar. Next ہے chatbots, offer conversational practice and support anytime. Fourth ہے data analytics, help teachers track progress and identify areas for improvement. And last ہے content creation, generate personalized quizzes and exercises to keep learners engaged. Thank you.